हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो हम टॉपिक करने जाएंगे सिंपल डेसिमल। हमने जो टॉपिक्स करे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो मैंने आपको रूल्स बताए, आप यू आर थिंकिंग लाइक दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट रूल इफ़ इन स्कूल वी आर फॉलोइंग द नॉर्मल मैथ्स रूल। ऑल आर थिंकिंग लाइक दैट कि अगर हम नॉर्मल मैथ्स ही फॉलो करते हैं तो हम ये वैदिक मैथ्स के रूल क्यों फॉलो करें। सो सिंपल, इफ़ यू फॉलो दिस वैदिक मैथ्स रूल, आपकी कैलकुलेशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका टाइम कम यूज़ होगा। इवन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फाइट करेंगे देन वैदिक मैथ्स रूल विल हेल्प यू इन दैट। आपका जो आपका टाइम कंज्यूमिंग आपका हो जाएगा। सो यूज़ द वैदिक मैथ्स रूल टू इंक्रीज़ योर कैलकुलेशन स्पीड। मेन मोटिव ही यही है हमारा। वैदिक मैथ्स हम क्यों करते हैं? जिससे आपका कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। ओके, सो आपको जो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी रूल्स बताए उनको प्लीज़ रिमेंबर दैट रूल्स। आप उनको एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। देन रिमेंबर दैट रूल्स, दैट व्हाट वी डू इन मल्टीप्लिकेशन, व्हाट वी डू व्हेन वी डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 99, what are the rules. Okay, so now today we are going to start with the simple decimal. So let's start. Place value of decimal number. Decimal number, you already know what is decimal number. If we say this point comes, it means that is a decimal number. Like I write 23.57. So हम इसको कैसे रीड करेंगे? How we are going to read this? 23.57. Okay, हम इसको 57 रीड नहीं करेंगे, 23.57. 57 is the wrong in decimal if we say 57. This is 57. Okay, this is the way to say the decimal digit number. Okay, now let's start. Place value जो आपको already पता है. See, before decimal we use the place value chart like ones, tens, 100, 1000, that you already know. And after decimal, tenth, this is tenth, this is 100th and this is 1000th. Okay, ये तो आपको पता ही है. Okay, and if you don't know then you can learn this place value chart. Okay, before decimal we use in place value chart ones, tens, 100, 1000. After decimal, tenth, it means th लग जाता है. Okay, 10th, 100th and this is 1000th. Okay, so अगर हम यूँ जाते हैं वंस, टेंथ, सो इट इज़ 10 टाइम्स बिगर. ये क्या हो रहा है? 10 टाइम्स बिगर हो रहा है. हेयर वंस, देन टेंस, सो 1 0 एक्स्ट्रा, 10 टाइम्स बिगर. देन इन 100 again 1 0 extra, so 10 times bigger. It is going 10 times bigger. Now if we are going from here towards the right side, it is 10 times smaller. If you are talking about after decimal, अगर हम decimal की बात करेंगे then we are going 10 times smaller. 10 times smaller means like see here, tenth. I have written tenth here. Tenth means 1/10. 1 in numerator and 10 in denominator. And if we are talking about 100th, that is 100. 100 in denominator. And we are talking about 1000, it means 1000. It means it is going 10 times smaller. Here 10 times smaller, 10 times smaller, then 10 times smaller. It is reducing. So how we write this? We write 0.1 here. We write this 100. This is 0.01. Okay, and here is 0.001. This is the way to write in decimal. Okay, so अगर हम left side ones, tens, 100, 1000 means 10 times bigger, and here 10 times smaller. 10th th लग गया. After decimal, 10th, 100th, 1000th, like this. Okay, now let's learn about the reoccurring numbers in fraction. You already know what is fraction when we use numerator and denominator, when we divide anything in equal parts. Okay, and the whole thing is divided into equal parts, that is called fraction. Okay, so reoccurring number in fraction. So let me give you first example. Reoccurring number means after decimal the digit is repeating. Number is repeating or digit is repeating, like 1.3333 and so on. So जब भी हम डिवाइड करेंगे हमारा जो है रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल 1.33333 like this. So we put, how we write this, 1.3 बार. हमने बार क्यों पुट करी? बिकॉज दिस इज़ अ रिकरिंग नंबर. जो नंबर रिपीट हो रहा है
दो नंबर रिपीट हो रहा है, सो 1.333 इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट लाइक दिस 1.3 and we put bar on it. Okay, it means this bar shows only 3 is repeating, not 1. This bar is only used after decimal. Okay, now the second example is, see, 12.45, not 45, we say 12.45. now you have to see the bar is on 45. It means 45 is repeating, like 12.45, 45, 45, 45 means it's not ending, 45, 45, 45. So that is called reoccurring number in fraction. Okay, now there are two types of reoccurring number, pure reoccurring number and the mixed reoccurring numbers. So pure means this, the example of these two examples are of the pure reoccurring numbers. After decimal the number is reoccurring 3, 4, 5, 4, 5 and here 3. Now what is mixed reoccurring number? Mixed reoccurring number क्या होता है? See, 65.83687 ये हमारी डिजिट है, बट यू हैव टू सी द ओनली एंड ओनली बार जिस पे है, बार किस पे है? 687. इट मीन्स 687 ही रिपीट हो रहा है, नॉट दिस. इसका मीनिंग हुआ कि 687 रिपीट हो रहा है, नॉट दिस. 65.83, 687, 687, 687 सो ऑन. ओके, आफ्टर डेसिमल जिस पे बार है means that is only the reoccurring number. So this is called mixed reoccurring number. Okay, two types of reoccurring number, pure and mixed. Pure means simple after decimal, if digit is on 1, if this bar is on 1 digit, it means it is repeating. If the bar is on 2 digits, it is repeating. But here in mix, if after decimal there is no bar on 83 and there is a bar on 687, so it means we have to repeat this only. 687, write 83 as it is, but repeat this. So when we are dividing, if we are getting the repeated digits, it means that is a reoccurring fraction. So okay, so reoccurring number in fraction is this. That is called reoccurring number if it is repeating. ओके, एंड ये प्लेस वैल्यू चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए. आई नो आपको पता है, बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, यू नोट डाउन दिस एंड यू लर्न दिस, दैट इट इज़ 10 times bigger and it is going on the right side 10 times smaller. So 10th we write 1/10, 100th and 1000th. Okay, and we put like this in decimal. Okay, so guys, now in the next class I am going to tell you the example of the mixed reoccurring number and the pure recurring, how we are going to do this in fraction, how we convert this in fraction. Okay, so kindly continue watch my video and get ideas how to solve these calculations in a simpler way. Okay, thank you so much guys, and subscribe and share my channel.